जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वीकली एनालिसिस फॉर कमिंग वीक फॉर ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कमोडिटीज. So let us start this session. I'm just waiting for. All right, okay. Chali, let us start the session. So I hope all of you had a great weekend, and now we are back to business from tomorrow as usual. Chali. So what's up with everybody और क्या हो रहा है? जून महीना शुरू हो चुका है, कल से शुरू हो जाएगा. And June is always a special month for equity markets. Number one, because of the second quarter closing, calendar quarter, and first financial quarter closing. Also, arrival of monsoons, a new season, new beginning. So, June generally has a tendency of giving a drop and then a pop. So June is very unique. There is a very big time cycle also that comes in June, and that is somewhere in the third week of the month. And this year it will be very important. Okay, so हर चीज को डिस्कस करेंगे, हर चीज को ट्रैक करेंगे. एंड एज ऑल ऑफ यू नो, आई कम लाइव every day twice. So once in afternoon during live markets, and one at night 10 o'clock at 10 p.m. Yeah, so we have a lunar eclipse on 5th of June. So whenever we have a lunar eclipse, generally many people experience a lot of mood swings. So please be careful. Now, since we are in the business of decision making, trading is the business of decision making, not buying, selling. Buying, selling are the actions, but you are in the business of decision making. So please be careful. Do not succumb to any pressure. Do not behave impulsively, because conditions will not favor positive results. Okay, so I'm not any astrologer. This is just my experience. I have observed over many years. So chali, so let us start. First we will discuss what's up with Nifty. Friday दोस्तों global markets negative थे, and just before closing we got S&P 500 shooting up, and almost 0.5% positive closing आई है. That was purely because of the May month monthly closing. So monthly closing, quarterly closing में इस तरीके की sharp up move या maybe sharp down move दोनों possible है. Now global markets, as of now, I have already posted the chart of German DAX, French market, UK. So the charts are looking very bearish, but they are at support. Okay, so charts तो काफी bearish है, but support पे है. So that means that if the supports are taken out, it can lead to a disastrous fall, or else it can be a technical bounce back as well. So global markets चाहे जैसे भी करें, निफ्टी जो है it will remain on its own, and we have to focus more on the local market. Now many people are discussing about this monthly candle or monthly chart of Nifty. So over the weekend many people messaged me that, sir, what is the implication of this, because some guy sent this on the internet, and then the other guys they reshare, and it becomes viral. Okay, so how do you read this candle? So how many people are reading this candle as a sign of a bullishness? See guys, whenever you read a candlestick, I don't know if you have read any book, or from where you have attained the training. Whenever you read candlestick, or whenever you read price action, you have to read it in complete context, and you have to read it at an individual level,
and then frame the trade setup. All right, so किसी कैंडलस्टिक से कुछ नहीं होता है, ये कॉन्टेक्स्ट, कैंडलस्टिक की साइज, उसकी बॉडी, उसका विक, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स that comes into play, and most people, they simply look at candlestick and give an opinion. It is not that easy, although it looks easy, and opinion does not cost any money in the market. So people give opinion, right? So now looking at this monthly candle, what it essentially means that number one, market is in a big range, market is in an inside bar. This bar is an exceptionally large bar, so I will cancel this. Whenever you have a WRB, its effect will be nullified. On lower time frame, its effect will be felt. On higher time frame, it will be nullified. Why? Because the time will bring more new variables in market, and the variables which caused this drop may not hold relevance. But on lower time frame, this will hold relevance, because lower time frame पे फंडामेंटल्स उतने जल्दी चेंज नहीं हो सकते. आप अगर सुबह से दोपहर तक ट्रेड कर रहे हैं, तो उस 5 मिनट के कैंडल्स में सुबह से दोपहर तक में 3:30 तक कोई मेजर ग्राउंड रियलिटीज चेंज नहीं हो जाएंगी, करेक्ट? बट इफ यू ट्रेड ऑन द मंथली और द वीकली चार्ट, इन 3-4 कैंडल्स एंटायर वर्ल्ड कैन चेंज. जिस तरीके से 2020 शुरू होने तक कोई कोरोना का कोई निशान नहीं था, and within 2 candles you have seen what has happened. Okay, now, so this candle is irrelevant. So basically we have this candle and this candle, so it is an inside bar with bullish bias. I can see some nice upsloping over here, which denotes that some long term money has come in the market, but it has not yet come in this last month. So overall क्या मतलब है? Overall मतलब ये है दोस्तों कि ये कैंडल जो है, this shows that all the buyers are stacked on the upside, so it is good provided they go and cut the high of previous month. अगर इसके ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करता है, तो because of this portion, market will go like this and it will drop very badly once again, and probably it will take a shape of this. Okay, so let us start with the regular discussion. Monthly charts सब होते रहेंगे. Overall your 10,000 is the ceiling. Most likely हो सकता है शायद हम इस महीने में इस लेवल को विजिट करें, but again the broader range remains the same. I believe the broader range will remain at 8,800 and your 9,800. So these two are the accepted range for this market. On upside you can add say 250 points, on downside you can reduce it by 250 points, thereby giving you the very established fair value levels on this market. ओके, सो आपका एक कंजर्वेटिव रेंज है 9,800 से लेके 8,800. ऊपर में आप 250 पॉइंट ऐड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब बाजार किसी तेजी में जाता है तो लोग थोड़ा यूफोरिया हो जाते हैं, तो एक थ्रो ओवर होता ही होता है. जैसे ये एक थ्रो ओवर था, ये एक थ्रो ओवर था, इसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है कुछ हो. ओके, वेदर ये कल से होगा कि नहीं होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे. मैं बस आपको रेंज दे रहा हूँ. सो अपसाइड में यू कैन हैव से 10,050, and on the downside you can have 8,550, thereby giving you this approximately 1,500 points range, which is I think the maximum range for June. All right, or established range होगा 9,800 से 8,800. I do not think market will sustain above the 9,800 mark. 250 points I am adding as a buffer, but on a sustainable basis I do not see that market will be able to hold above the 9,800 mark for pretty long. Similarly, on the downside, if market comes at 8,550 in June series, it can be a good buying opportunity, but we will see at those times, because नीचे में खरीदना खतरे से खाली नहीं है, and in the same fashion ऊपर में शॉर्ट करना भी खतरे से खाली नहीं है. Now, one good thing that has happened in this week is on the Nasdaq. Nasdaq जो है बहुत ही क्लोज है अपने ऑल टाइम हाइज बनाने के लिए. But दोस्तों, there are a lot of similarities now coming between the 1929 Great Depression and this market. So I will discuss on some other day. चलिए फिलहाल निफ्टी की डिस्कशन करते हैं. So वीकली टाइम फ्रेम पे हमने 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव कैंडल के बाद एक शानदार अच्छा एक व्हाइट कैंडल दिया है, यानी एक बुलिश अप मूव आई है बाजार में. बट
This up move has lot of responsibility on its shoulder. Okay, this up move has lot of responsibility on its shoulder. Why I'm saying is because if you look at the weekly chart of Nifty, there is some gap, and this gap, there is some partial gap left over here, which we could not fill last time. And similarly, there is one more gap on the daily chart, which is somewhere over here. Okay, so Nifty is now approaching a crucial resistance. Most of the people are bullish. ये अच्छी बात है, बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि निफ्टी डेली चार्ट जब आप देखेंगे तो जो रिसेंट क्रैश का जो डाउन स्लोपिंग पिचफॉर्क है, इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू दिस लेवल. नाउ लास्ट टाइम हम एक न्यूज के ऊपर यहाँ पे आके रिएक्ट हमने किया था, एंड वी हैड फॉलन डाउन प्रीटी ड्रामेटिकली. Now once again we are coming at this similar location, although we have this pending gap of from 9600 to 9751. This 150 points gap is still pending. I believe market will max fill this gap. Okay, maybe market goes above this also, but till your 9735 is not crossed, I feel this much will be the maximum upside till 9735, and then market can again start to drop and come till 9100 mark. ओके, ठीक है. तो ये एक इस वीक का मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू दे रहा हूं कि बाजार मेरे ख्याल से अपसाइड 150 पॉइंट का स्कोप है, क्योंकि इतना नजदीक आ चुका है, पेंडिंग गैप है, तो ये थोड़ा ऊपर और जाएगा, थोड़ा ऊपर और जाएगा. बट आई बिलीव दिस लेवल ऑफ सी 9735 दिस इज प्रीटी क्रूशियल, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर बाजार इस तरीके से ऊपर जाके नीचे रोल डाउन करना शुरू करता है, और स्ट्रेट अवे एक ही टारगेट होगा इस डाउन मूव का, वो होगा 9100. ठीक है, ये एक सिनारियो मैं बता रहा हूँ. ये जब यहाँ आएगा तो हम देखेंगे कि शॉर्ट करना है कि नहीं करना है. दैट विल टोटली डिपेंड, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन दैट ये सिनारियो होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है. जैसा आपको याद होगा कि थर्सडे रात को ऑन दिस कैंडल आई हैड सेड दैट फ्राइडे को गैप डाउन हो सकता है, and there was no chance looking at global markets or any other thing which could have suggested that Friday will be a gap down, and Friday there was indeed a gap down. So sometimes your experience guides you well in advance. Now what are the mob level for weekly? तो दोस्तों वीकली पे इस हफ्ते का मॉब लेवल जो है ये है 9390. यानी जब तक 9390 लेवल इंटैक्ट है, वीकली ट्रेंड अप में होगा. ओके, नाउ सपोज अगर हम यहां से गिरते हैं तो 9390 पे सपोर्ट लेके वापस से हम एक और तेजी के लिए अप्लाई करेंगे, एंड वी कैन देन गो एंड फिल दिस गैप, एंड मे बी देन वी स्टार्ट द डाउनफॉल. ओके, सो 9390 इज द वीकली मॉब लेवल. जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, वीकली बेसिस पे ट्रेंड इज अप. Weekly basis पे trend is up. Last week, what was the mob level that I had given? I had straight away said 9200, that this is the mob level, and if we cross this level, minimum 9400 is coming, and 9600 can very well be touched. But 9400, this is sure shot above 9200. I don't know how many people remember this, but this is the exact wording that I had used. And we saw 9400 coming, and 9600 also came. Similarly, in this week 9390 is the mob level. इसके ऊपर बुलिश है बाजार. पहला अपसाइड टारगेट है 9600, और दूसरा टारगेट है 9750, and third target, I will also give one more target for one specific reason, and I'm just writing the level. It is 9868. 9868. Okay, now this third target of 9868, this is very crucial. This is very crucial, and just be careful when this level comes, because this level has the potential to suddenly create a fall in this market. So whenever this level comes, please be careful. That's all I would say at this juncture. Okay,
Now, what is the downside level? Below 9390, market will definitely lose all the strength, and there is no support till 9100 level. And if we break that, then again towards 8925 level. So दो टारगेट नीचे में, तीन टारगेट अपसाइड में. बायस एब्सोल्युटली न्यूट्रल है मेरा, किसी भी बायस के साथ में इस वीक नहीं जाना चाहता. फ्यू थिंग्स विच आर ऑब्वियस. देखिए यहाँ पे सबको दोस्तों ट्रिपल टॉप दिख रहा है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि मार्केट जो है आपको कहेगा कि आप शॉर्ट करिए. अब सपोज आपने शॉर्ट किया है और बाजार कल गैप डाउन होता है, तो be rest assured that if the fall doesn't continue below 9390, market will come back again and hit this three, break about this break about this three consecutive highs and reach on the upside towards the 9735 level. चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका वीकली एनालिसिस. आई होप द मैसेज इज क्लियर. न्यूट्रल्स है व्यू, लेवल टू लेवल काम करेंगे. रेंज जो है फॉर दिस वीक आई फील द रेंज विल बी 9735 and 9390. So pretty much you have a 350 points range that I am expecting. Now as we proceed in the week, जिस तरीके की प्राइस एक्शन होगी, न्यूज फ्लो होगा, हम रेंज को कभी भी इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, सो हम एक एक व्यू के साथ जाते हैं, एक रेंज, एक बायस और एक प्रोजेक्शंस के साथ जाते हैं. बट वी आर नेवर रिजिड, वी फ्लो लाइक वाटर. इफ मार्केट इज गिविंग अस सम इनसाइट, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और नया अपना व्यू, नया लेवल्स वगैरह भी बना देंगे. बट जो एक प्राइमा फेसी जो एक व्यू और जो लेवल्स होता है, it very rarely they change. Most of the like 85% of the time they remain the same. Only in exceptional cases अगर कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज आ गया तो फिर थोड़ा सा मामला चेंज होता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीकली एनालिसिस. लेट अस go back on daily chart and look at the levels for tomorrow for Nifty spot. So very quickly I will give you the mob levels. So Friday को दोस्तों there was a nice breakout above the 9500 level. Okay, so this was a nice breakout. So my first target or on the upside. Okay, so the mob level for tomorrow, which is Monday, the mob level is, trend deciding level is this breakout area. Very very simple. So जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, बाजार ऊपर जा सकता है. So the support level is approximately 9510. Upside target is 9658, 9658, and second upside target is 9730. The downside level, यानी जब मॉब लेवल ब्रेक होगा तो इसके नीचे बाजार बेरिश हो जाएगा. एंड बिलो द मॉब लेवल, फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट विल बी 9435, 9435, and second target will be your 9366, 9366. So it is very dicey how the markets will open, because let us assume the scenario. Say for example, you see a gap up opening tomorrow. So if there is a gap up opening above the previous day high, go with the bullish bias till the gap is holding up. Okay, till the gap is holding up. अगर गैप के नीचे आ जाता है तो बाजार तेजी से 9475 पे ही आके सपोर्ट लेगा. I do not think mob level will hold. It will come down very quickly towards 9475. Okay, if there is a gap down opening but above the mob level, then we will go as per the mob level. जब तक इसको होल्ड कर रहा है हम एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे. बट इन दैट केस हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 9600, ना कि 9658. क्यों? क्योंकि ये फ्राइडे का हाई है, तो पहले हम फ्राइडे के हाई तक जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो इस तरीके से ये दो सिनेरियोज हैं. I do not think that market will open beyond 9658 and market will open below 9500. बहुत ही सरप्राइज हो जाऊंगा मैं अगर ऐसा होगा तो. I believe somewhere in this range market will open, and कहीं भी ओपन हो, ओपनिंग मॉब लेवल के ऊपर ही लग रही है कि होगी. तो इन दैट केस एक अपसाइड तो आएगा ही. वो अपसाइड अगर ऊपर में ज्यादा
सस्टेन नहीं करता है तो मैं डेफिनेटली फिर शॉर्ट ट्रेड करूंगा, और एल्स आई विल जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द गुड लेवल्स टू कम एंड देन टेक अ ट्रेड. सो दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी फ्रंट. वेरी क्विकली बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं एंड देन वी शैल मूव टू द स्टॉक्स. ऑलराइट दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दी वीडियोस अमंग योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स. ऑलराइट, सो व्हाट्स अप विद द बैंक निफ्टी. सी बैंक निफ्टी में आपको मैं एक चीज बताता हूं. लुक एट द बैंक निफ्टी मंथली चार्ट. ओके, नाउ व्हेनेवर यू सी अ लॉन्ग टर्म चार्ट इन दिस फॉर्मेट, always remember that first any type of a technical drop will create some sort of triangle. Why? Because prices has given expanding movement, and after expansion contraction is the name of the game, and that is why you are seeing subdued movement in the bank nifty. Now on this bank nifty monthly chart, there is a clear cut support at 19,000 19,050 लेवल 19,050. ये पिछले 3 महीने से ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल. एंड नाउ 3 कैंडल्स हैव मैनेज्ड टू होल्ड अबाउट दिस लेवल. इफ एट ऑल इन फ्यूचर अगर हमको कोई मंथली क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही बेरिश है, एंड देन वी मे सी मिनिमम 16,000 levels on the बैंक निफ्टी. नाउ वीकली मॉब लेवल क्या है? तो दोस्तों वीकली मॉब लेवल बहुत ही क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, 18,800. ओके, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन दैट द वीकली ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल 18,800 है. इसके ऊपर जब तक हम इसके ऊपर हैं वीकली बेसिस पे ट्रेंड इज अप. एक ही टारगेट मैं अपसाइड में दूंगा एंड दैट इज 19,850, जो आज से 2 हफ्ते पहले मैंने यहाँ से शॉर्ट शुरू करवाया था, एंड दैट lasted till 17,000 level. So once again we have a good chance to retain or retest this level. That is why I'm giving only one target. I do not see Bank Nifty initially surpassing the 20,000 mark. So it is 19,850 to 20,000. Okay, लगभग राउंड नंबर 20,000 तक है. That's it. बिलो मॉब लेवल एक टारगेट में दूंगा जो है आपका 18,200. 18,200 ये लोअर टारगेट है फॉर दिस वीक. सो आई अज्यूम द वीकली रेंज फॉर दिस वीक टू बी 18,800 टू 20,000 मार्क. सॉरी, 18,200 टू 20,000. Okay, so I will write it down like this: 18,200 to 20,000. Now जो लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करते हैं, आप लोग इस एनालिसिस का बहुत फायदा उठा सकते हो अगर आपको आता है, if you know how to write options or whichever strategies you want to use. All right, now मॉब लेवल हो चुका है. वीकली का बायस एब्सोल्युटली न्यूट्रल है, कोई बायस नहीं है इस वीक के लिए, बट आई एम अलर्ट going into the 5th of June. Okay, so I am alert as we proceed in this week because now the action will start, and do not be surprised if you see a very jumping June this year, especially around the 20th 22nd June के आसपास. ठीक है, चलिए. सो व्हाट इज द लेवल फॉर टुमारो? ट्रेड प्लान क्या है और ट्रेड लेवल क्या है, वेरी क्विकली हम देख लेते हैं और स्टॉक क्वेरीज पे शुरू कर देंगे. सो द मॉब लेवल फॉर टुमारो इज 19,055. व्हाट इज द मॉब लेवल? 19,055. एंड does it ring any bell? What is the significance of this level? The significance was just shown on the monthly chart कि 3 मंथली कैंडल की बेस इसी लेवल पे है. So if the monthly candle wants to hold tomorrow, this level will provide support. So 19,055 is the mob level. Above this, one target I have in mind is 19,400, and second target which I have in mind is 19,700. So 2 targets on the upside, and below mob level I feel at least we should touch 18,735. So that will be my first target on the downside, and if this is broken, then I am afraid that we will see 18,400. So that's all. 2 लेवल नीचे में, 2 लेवल अपसाइड में. बायस दोस्तों
एकदम न्यूट्रल है, जैसा प्राइस अनफोल्ड होगा उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। सो आई विल वाइंड अप द Nifty and Bank Nifty analysis. It is almost 25 minutes and we have discussed in detail weekly range, weekly bias, सारी चीजें आपसे जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं, ओके। एंड नाउ लेट अस टेक द स्टॉक क्वेरीज। चलिए, सो स्टॉक क्वेरीज को फटाफट थोड़ा देखते हैं। आई थिंक फर्स्ट जो स्टॉक क्वेरी है वो है डीएलएफ पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम we have a query on DLF. Generally, I do not get queries on DLF. I used to trade this stock a lot. This year, I traded on your budget day, and it was also on the budget day, and I traded live with my students. Now, DLF is trying to break from the weekly consolidation, weekly triangle, and it is heading into the resistance. So there is a big resistance on DLF, which is approximately say 155. Be cautious, because whenever your index approaches a major resistance zone, what happens is that you will invariably find many stocks which are breaking out. So when you see out of 10 charts, 8 charts or 7 charts are breaking out, but at the same time your index is hitting a resistance zone, always take these breakouts with a pinch of salt. So I always advise that make two trading plan. One, if the breakout succeeds, what will you do? And second, if it fails, what will you do? Because as a trader, if you go with just one plan, then you are not a trader. Okay, you are not a trader, because nobody has seen the future, neither we nor you. We do not know what will happen tomorrow. So we go with two types of plan A and plan B. So for DLF, there is a major resistance at this 155 band. ओके, पैटर्न ब्रेकआउट है, बट हॉरिजॉन्टल सप्लाई काफी स्ट्रांग है एट द जोन ऑफ 155. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट be very careful, and if you are taking long, I think 155 is a major barrier to this stock, and I think it will take resistance. All right, so that's all I would say as of now. A very good support can come at the 142 mark, and positionally the short term moving averages are aligning, curling up, mid term is flattening, and long term is still downtrending. All this suggests that you will see curves like this in this stock. So next time also you may see curves. So this curve can take support at 138. Okay, so ऊपर में 155 is a major resistance, and be very cautious. And on the downside you have 142 that will offer a support for a technical bounce, and 138 as the level that will bring support structure wise, यानी ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये तब तक बरकरार रहेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल ऑन डीएलएफ फॉर टुमारो, व्हिच इज मंडे। आई थिंक 147 can offer a good support, but before taking trade, please watch and then take a trade. Okay, so this 146 should offer good support, and you can use 143 as a stop loss. Target will be 152 and 155. Again, I am saying please be watchful and then only take a trade. 155 is the last, then again reverse 142, reverse 138, and then we shall see. So I have told you up cycle, I have told you down cycle, everything is done for this stock. Fine. So जिसका भी query था, I hope you have got the answer. All right, so next is your Sun TV. Let me take Sun TV. Okay, now Sun TV, if you remember, we had discussed this stock 2-3 days back. Okay,
And at that time also I have said the same thing, that these kind of stocks, they are mostly used by shorters, the perma bears. And do not get infatuated if you see a good run up in this stock. Now last week is a very tight range type of a candle. Previous several weeks have been, bringing pressure from the upside. Monthly candle, if you see, last month was one of the smallest month in last 3 4 monthly candles. So what is the view on this stock? See, this stock, I generally do not play for the long side. I wait for major rallies to only short. What I would say that operator has been active in this stock, and you have seen a selling pressure coming on Friday. So I will give you one mob level based on that. If anybody is interested, they can trade. The level is 381. So if 381 is held, say 380 or 381, this is broadly the mob level. Till this is holding up, this stock can bounce towards 400 mark for once. Okay, daily closing above 400 or at 400 will bring some more upside. In that case, you can easily see 420 level on this stock, and 420 is very unique for Sun TV. Fine. So that's all. Below 380, game is out for bulls, and bears will start to dominate. If market also turns down, then we will see 350 in this stock. Fine. Overall, the 18th May candle, this is the crucial one. This high of this candle is important. That's all. Okay. चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं. And I think I should take which stock. I can take ICICI Bank is one stock that I wanted to take. See, ICICI Bank has given fantastic reversal on the weekly time frame chart. So very satisfied by the weekly candle. So this suggests that in June month, if I get a good drop, this stock will be a nice buying opportunity. For now, I think as of now, 344 is a strong resistance over here. So approximately this 343, 344 level is a major barrier for coming week. So दोस्तों आने वाले हफ्ते में आईसीआईसीआई बैंक पे रफली 344 का एक लेवल दे रहा हूं मैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. Okay, and if stock uh, fade at this level, if the stock does not show any momentum or any strength to continue beyond 344, I will not hesitate to short this stock. Also, there is a pending gap over here. I feel it is at 338 or something, so that level will also provide as first resistance. Yeah, it is 338. So 338 मेजर आपका रेजिस्टेंस है. 338 से लेके 344 इस 6 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एंड then we can look for shorting for tomorrow Monday. I believe you can buy this stock. I can give the one level which I feel 326 is should be the good level. 326 you can buy. It will be slightly a risky one, but I think 326 can be bought. 319 can be this, and then you can see 336. And do remember that 338 to 344, this is the distribution level that I'm watching, meaning that over here, if stock starts to take resistance and if reversal happens, I will short this stock. In that case, एक ही target मेरा नीचे में होगा, and that is retest of this red line or the breakout which we have got. So from 338 344 से I will try to play for 308. Okay, so this trade I have planned on ICICI Bank for sometime in June. Let us see if it works. For tomorrow, stock is strong, and I think one up move can come, but be careful. You are now in the late stage of this run up. Okay, so 326 पे buy कर सकते हैं, 319 का stop loss लगा सकते हैं, 336 below 326 I think stock will become very weak. So if you know price action, probably you can exit in next 2-3 points as well, instead of waiting at the SL. So that's all for ICICI Bank. Okay, DLF I have already
updated. So DLF, I have just now spoken about DLF. You can just rewind the video. Voltas, let me take Voltas. All right. Let us see Voltas. What's up with Voltas? Voltas, I think last week we had discussed, and we had, let me open the chart. Let me open the chart. Voltas last week when I had discussed, I had said that the stock has undergone a nice structural change, which is bullish in nature. And in June month, if we get a panic dip type of a situation, we will be buyer in this stock. Okay. Now, having said that, what is the immediate resistance at this stock? It is around 495 to 505. Okay. So there is a two level which is coming. uh, First is your 495, which is this. If you can see, the last four weekly candle resistance is at 495, and you have one resistance coming by the moving average, which is at 507. So roughly speaking, this 500 mark is the level that we should be watchful as a major resistance, and on the downside you have 465 as the support. So जून मंथ के लिए ऊपर में 505 एंड नीचे में 465, ये एक इनिशियल रेंज के साथ ये महीना शुरू होगा, ठीक है. एंड फॉर ट्यूसडे, सॉरी फॉर टुमारो, I think this stock has a good support at 468 level. So one can look to buy near this 468, 465 type of a level for one more push towards the 480, 485 mark. All right. And please be careful while you are buying. Please maintain stop losses. Please assess your own risk and then only take a trade. Do not rush for trades. Let them come on your back. Then play for it. Okay. So these are the levels, and yeah, that's all for your this thing. Okay. Now let us move to the next stock. Next stock is uh, Piramal Enterprise. Everybody knows that I'm a big shorter in Piramal Enterprise. I always wait for 50%, 40% rallies in this stock only to short. And if you have been watching me since last year, you know that we have always maintained shorts on these stocks, which are Piramals, your Ratnakar Bank, Yes Bank, and all these stocks. All right. Now, see, this weekend, most retail traders are interested in this stock, correct? Most retail traders are interested in this stock of Piramal, and everybody is now jumping their bandwagon. What I would suggest is that, such stocks, they are notorious, and do not get trapped. That's all I would say. Now, looking at the technicals, it seems that the stock is on verge of a breakout. You can interpret this chart in many multiple ways. What I am looking as a trader over here is, okay, one pop and then possible drop. So what I will do is I will wait for the pop to come, and then if exhaustion comes, then only we will short. Then only we will short. Okay. So my plan is very simple. If the breakout comes, I'm not a shorter. I will leave the breakout, let it go wherever it wants. Even if it rallies till here, I'm absolutely fine. But if the pop happens and it doesn't sustain, then I'm going to create the drop. Now I have been trading these type of stocks for many years. Okay. And I know how these stocks trap retailers. They first go sideways, undergo consolidation, invite retailers, and this, since this was the first, this is the second, one more pop, and then the third happens. Okay, so I have a particular plan of playing them. Upside में दोस्तों इसका 967 is a major resistance, and you have 1028 as the upside target. So 967 is a major level, and there is one more resistance till 998. So pretty much it is, this 1000 तक का इसका एक रेंज है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है. ऊपर में 1028 का लेवल थोड़ा आप ध्यान रखिएगा. दैट्स ऑल आई वुड से. ओके, ऑन दिस स्टॉक.
All right, so who is barking over here? I love dogs. I really like dogs a lot. ओके चलिए, सो पिरामल हो चुका है. नेक्स्ट कौन से स्टॉक को लेते हैं? चलिए बताइए कौन से स्टॉक को लें. डीवीज लैब. डीवीज लैब, लेट मी टेक डीवीज लैब. ओके, डीवीज लैब. काफी दिनों के बाद डीवीज लैब यहाँ पे आ रहा है. जनरली वी डू योर सन फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, ग्लेनमार्क, यही स्टॉक ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं. ज़्यादा इन्हीं पे क्वेरीज आती है. नेवर माइंड. डीवीज लैब को भी एक बार देख लेते हैं. सेंचुरी, यूपीएल, टाटा स्टील, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं. लेट मी take one by one, guys. And once more, if you are interested in the upcoming training, which is uh, next week, so all these serious guys, you can register for the next coming training. Only serious guys should approach. WhatsApp number is already given. It is on 6th and 7th of June, and we will deal with price action training. All right, price action and psychology and trading setups and all these things we will discuss. And we have 6 days or maybe 5 days to go for this training. चलिए, so DV's lab को एक बार चेक करते हैं. ओके, डीवीज लैब को चेक करते हैं कि डीवीज लैब में क्या हो रहा है. वेरी वेरी सिंपल चार्ट. फर्स्ट स्टॉक जो है अपने मीन रिवर्जन को करता है. राइट, व्हाई मीन रिवर्जन? बिकॉज व्हेनेवर यू हैव सो मच डाइवर्जेंस, whenever you have so much divergence on your chart from the moving average, there will come a point when mean reversion will happen. And generally, if it is at or above the resistance line, it will take double support and then try to bounce. But having said that, see, this stock has run up a lot and there is no margin of safety for buyers. So what I would do in this situation is simply, exit and stay away from this stock. Generally, I do not like to buy at the top. So for me, there is no trade over here. If you are a buyer, I think you should book out or it's your call. मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा. No short, no long. It's a avoid for me. That's it. Next stock. See, I do not track this Vodafone and Idea. Vodafone मैंने आपको थर्सडे को भी कहा था कि वोडाफोन में कुछ भी हो जाए क्या होगा, अंत में गिरेगा ही. देयर आर ways in which these stocks move. गोल्ड सिल्वर लास्ट में लेते हैं. अभी 42 मिनट्स हो चुका है लाइव सेशन को. सो लेट अस टेक इन द लेटर पार्ट. ब्रिटानिया एक बार चेक करते हैं बिकॉज ब्रिटानिया पे काफी देर से क्वेरी है. टाटा स्टील लॉन्ग, LLP नो व्यू, नथिंग. आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई those type of stocks. Let us take FNO stocks, which most of the people are trading as of now. So this Britannia. So guys, अगर आपको याद हो तो ब्रिटानिया पे हमारा लास्ट मंथ का व्यू क्या था, that this stock will go towards 5,000 mark in next at least like 12 month cycle, correct? So for all those who remember, this stock is now approaching the all time high and 3,400 लेवल के आसपास ये आ चुका है. शॉर्ट टर्म में अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म में अगर आपको इसको ट्रेड करना है, सो लॉन्ग तो फ्रेश करना बहुत ही डेंजरस है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन. द स्टॉक इज सो far from the any type of support, very stretched move, lot of resistance in this zone. I will not buy, I will just hold, I will just ignore. Okay, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो फिलहाल मैं एक दो दिन इस स्टॉक को हाथ नहीं लगाऊंगा. लेट इट कूल इट ऑफ, थोड़ा सा इसमें कूलिंग हो जाए एंड देन वी विल टेक अ ट्रेड. सो एज ऑफ नाउ अवॉइड, नो व्यू, अवॉइड. सपोर्ट इसका 3292 पे एक अच्छा सपोर्ट है. 3292 पे एक अच्छा सपोर्ट है, दैट्स ऑल. SBI, HUL, okay, after SBI I will take HUL. Now SBI is the stock to watch out for in this week. Why? Number one, it has given a late stage expansion. Okay, it has given a late stage expansion. इसका क्या मतलब है, ये देखिए इतने दिनों तक इसमें कुछ नहीं हुआ है और लेट स्टेज इसने ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट किया है और ड्रॉप के बाद अच्छी खासी बाउंस आ गई है.
Now, if you look at the pattern, the short-term moving average is not crossed in last two attempts, and we are very close to that level. That is why मैंने last time जो है आपको ये दिया था कि 165 का लेवल, 165 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने लास्ट टाइम ही ये मैंने कहा था. सो अभी क्या सीन है इस स्टॉक में, लेटेस्ट सी अभी क्या सीन है इसको हम देखते हैं. दोस्तों, इस स्टॉक में अगर आपको याद हो तो हम कब से बेरिश हैं, जब से चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तब से हम बेरिश हैं, सिंस लॉन्ग 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 टाइम. एंड ऑल दोस्त who have been following me since 1 year, they know that what I'm saying. Okay, now दिस स्टॉक रिसेंटली अगर आपको याद हो तो इसमें हमने एक और बार एक शॉर्ट बोला था कि 200 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, ओके, दिस स्टॉक विल अगेन फॉल. एंड टारगेट हमने दिया था 150 का. सो धीरे धीरे 150 का टारगेट आ गया. एंड वेयर इज द बॉटम, 149.65. नाउ व्हाट इज द करंट सिनेरियो. करंट सिनेरियो दोस्तों थोड़ा सा इसमें तेजी है, सरप्राइजिंगली थोड़ा सा तेजी है, और ये तेजी मुझे अच्छी लग रही है. बट कोई भी एक सेक्युलर डाउन ट्रेंड की पहली तेजी जो है, इसको मैं बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद ही इसको मैं वेटेज देता हूँ. ठीक है. सो एसबीआई में फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेवल टू लेवल काम करेंगे और शॉर्टर्स थोड़े केयरफुल हो जाएं. देखिए, मैं खुद एसबीआई में जो है 320 के लेवल से शॉर्टिंग में हूँ. तो आज मैं अगर कह रहा हूँ कि शॉर्टर को केयरफुल हो जाना चाहिए, यानी आई हैव प्लेड द बेस्ट शॉर्ट साइड इन द एसबीआई. So there is some change in behavior in this stock. There is some characteristics which has come. Okay. Now, change in behavior and all these things we discuss in training, so I cannot say much in this live session. इनसाइड बार है वीकली में, इसका ये मतलब है कि अगर ये स्टॉक इस हफ्ते 167 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इसमें तेजी आ जाएगी और अपसाइड टारगेट वीकली बेस पे हो जाएगा 182 का. तो वीकली में आपको लिख देता हूं ताकि पूरे वीक के लिए वैलिड हो जाएगा. अबव 168, if the closing comes above 168, stock should go and test 182. Till 168 is holding, stock will trade in this inside range, inside candle. So the bottom will become the support. So what is the bottom? 150. यानी ब्रॉडली स्पीकिंग 168 से 150 का आपका रेंज है. 168 के ऊपर जाता है तो ये जो आपका 18 पॉइंट का है इसको आप प्लस कर सकते हैं, या आप अगर कैंडल वाइज देखते हैं तो 182 का रेजिस्टेंस आएगा. 150 के नीचे अगर हम वापस ब्रेक करते हैं तो अगला टारगेट है दोस्तों 144 का, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल. 144 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म के लिए 166 का रेजिस्टेंस है. 166 if not surpassed, once again you will see a down move and you can revisit 155, 152. That's all I would say on SBI as of now for this week and for tomorrow. चलिए let's next stock पे move करते हैं. All right, what's up? कोल इंडिया और हेवेल्स में 450 पे बाय क्यों नहीं किया, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. हेवेल्स को मैं इतने दिन से कंटिन्यूअस बेसिस पे हम सारे स्टॉक्स लेते हैं. ऐसा नहीं होता है कि हमने एक स्टॉक लिया फिर एक महीने तक उसको कुछ देखा ही नहीं. अपडेट मैं रोज देता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस. सो हेवेल्स में आप सबको याद होगा कि 450 पे हमने बोला था कि कैश में बाय कर लीजिए. एफएनओ ट्रेडर के लिए मैंने बाद में ट्रेडिंग लेवल दिया था 466 का. सो एफएनओ ट्रेडर्स के भी बल्ले बल्ले हो गए और कैश वालों के भी. बट नाउ व्हाट्स अप विद द स्टॉक. सी, दिस स्टॉक इज नाइस, दिस स्टॉक इज वेरी गुड, but now the reversal is also very good. But FNO traders, please be very cautious, क्योंकि ये स्टॉक को FNO में प्ले करना जब ये अपने मूड में आ जाता है तो इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है. ठीक है, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है. ट्रेंड पूरी तरीके से अप है, डबल टॉप स्ट्रक्चर बना चुका है 506 505 पे, एंड दिस कैन गिव अ ब्रेकआउट. सो in this stock, expect a breakout above the 504 level to come, and in that case I see only one target, and that is 530. So if you see, this stock is one of my favorite stock. I have been trading this stock since I was a child, and I am very well versed with its personality. See, this is the peak, and now above 505 504, and
this will be the peak. So 530. So 530 will come about this breakout. ठीक है. So that's all for UPL. Short term में immediate support है दोस्तों 485 का. So 485 is the strong support. Holding 485. First target is 505, and above this 505, no looking back till 530 is not achieved. All right. यूपीएल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कैश में. देखो कैश में कर सकते हो, जब कैपिचुलेशन है तब कैश में आप कर सकते हो. एक बार यूपीएल को देख लेते हैं. यूपीएल हमने लास्ट वीक इसको 2 बार इसमें शॉर्ट किया था मैंने. एक बार प्रॉफिट हुआ था, एक बार लॉस हुआ था. फ्राइडे को भी मैंने शॉर्ट किया था, बट फ्राइडे को इसमें मुझे 10 पॉइंट का घाटा हो गया. एंड फ्राइडे को एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, अगर आपको याद हो तो थर्सडे को मैंने जो चीज कहा था फ्राइडे को मैंने उसका उल्टा कर दिया. ओके, एंड आई वाज सेंसिंग समथिंग, इट हैपेंड, बट आफ्टर इट हिट माय स्टॉप लॉस, देन इट हैपेंड. ओके, सो दैट इज समथिंग which is bad. क्यों क्या मैंने कहा था पहले मैं ये आपको बताता हूँ. थर्सडे को हमने डिस्कस किया था. मैंने कहा था दोस्तों कि ये स्टॉक जिस तरीके से पिछली बार ये 400 पे रेजिस्टेंस लेके ड्रॉप हुआ था, ये स्टॉक वापस उसी जगह पे आ चुका है. स्मॉल बॉडी कैंडल है, एंड इफ इट डज नॉट क्रॉस दिस 400 मार्क, हम इसको वापस से शॉर्ट करेंगे 375 के लिए. बट मैंने ये कहा था कि अगर 395 के ऊपर इंट्राडे ज्यादा सस्टेन कर रहा है तो शॉर्ट को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाएगा. अब ये चीज मैंने ही कहा था, और मैंने ही अगले दिन इसको 403 के आसपास मैंने ही शॉर्ट किया. नाउ आप सोचोगे कि खुद ही पता था कि ब्रेकआउट होने वाला है, फिर भी क्यों शॉर्ट किया. तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इंट्राडे जब चार्ट में इसका देख रहा था तो मुझे एक फ्लश का एक पैटर्न दिखाई दिया, जो सबसे पहले टॉप की निशानी होती है. ओके, एंड योर इफ योर स्टॉप लॉस हिट, अगर वो फ्लश फेल है तो आपके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो बहुत शार्प रैली करेगा. ठीक है, इसीलिए आपकी स्टॉप लॉस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैड टेकन विद अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क, एंड आई वाज बेटिंग कि इट वाज मोर ऑफ अ रिस्क प्ले, रिस्क रिवॉर्ड प्ले था. एंड जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉक में 15 पॉइंट की स्पाइक आई, वेरी वेरी शार्प स्पाइक. नाउ सी these things you need to gauge. अब यहाँ पे कोई अगर बैठा रह जाता तो उसका बैंड बच जाता, राइट. तो इसीलिए आप अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड प्ले कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भाई सिस्टम में ही लगा के रखा करो, मन में नहीं, क्योंकि वो स्पाइक हो जाएगा. एंड इन द एंड इट लेफ्ट अगेन कंप्लीटली. मैंने यही पे शॉर्ट किया था मैंने, एंड दिस ब्रेकआउट हैपेंड. सो 410 ये मैंने स्टॉप लॉस रखा था. मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद तुरंत 10-12 पॉइंट का सीधे एक जंप. सो इट्स ओके, क्योंकि स्टॉक में हमने पहले बहुत इसमें यहाँ पे शॉर्ट करके हमने बनाया है. सो इट इज ओके. नाउ एज ऑफ नाउ क्या चक्कर है? चक्कर दोस्तों सिंपल सी बात है कि स्टॉक का अब बेस बन चुका है. जहां से ब्रेकआउट हुआ था ये अब इसका बेस है, यानी आपका 400 का लेवल, यू नो दिस 398 and this 402, this 4-point band, this is a nice base now. Why? Because we have just now broken, and it is a fresh thing, and for the first time we have managed to cross the 65 moving average. So एक बार ये वापस हो सकता है 420 और 427 का लेवल दिखाए, बट अब ये लेट स्टेज में है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. बिकॉज लेट स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके की बड़ी अपमूव आती तो है, बट देन रिवर्सल होने लगता है. सो दैट इज द रिस्क. सो प्ले सेफ, यूज स्टॉप लॉस, and holding this base of 398,402, we will see 420 and 427 for months. ठीक है. So UPL पे I think I've given enough explanation. Now let me move to the other stock. HDFC AMC में कोई view है क्या? HDFC AMC, let me see. HDFC AMC Asset Management. Okay. Guys, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक बटन दबाना मत भूलिए. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड all those who are interested in joining next week training, we are conducting it on Saturday and Sunday, June 6th and 7th, completely online. WhatsApp number already diya hua hai. All the details are also mentioned on the Facebook, Instagram, everywhere. So all these serious guys, if you are interested to learn my type of technical analysis, price action, how to trade, how to make career in trading, everything A to Z, we will touch base on everything. And once you register, you will be added in the Telegram group.
where 6 month life support will be provided. We already have our group running since last two, maybe 2.5 years approximately. दो सवा दो साल हो चुका है जब से हम ट्रेनिंग शुरू किया है हमने. हम कभी भी ट्रेनिंग के बाद जो है भागते नहीं है, वहीं पे खड़े रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द यूएसपी ऑफ आवर ट्रेनिंग, दैट वी नॉट ओनली टीच इन 2 days, we provide lot of support thereafter also. It's all about relationship. देखिए, आपको किसी मेंटर से, किसी टीचर से अगर रिलेशनशिप आप बना के रखेंगे तो आपको बहुत सारे अनेक फायदे होते हैं. कुछ फायदे सामने से होते हैं, कुछ फायदे अलग तरीके से भी होते हैं. सो मैच्योरिटी उसी इंसान में होती है जो रिलेशनशिप बनाना सीखता है जिंदगी में. हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप देखोगे तो जिंदगी को कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जिंदगी ना सफेद होती है ना काली, हमेशा ग्रे होती है. ओके. नाउ द स्टॉक एचडीएफसी एएमसी, सी स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न में है, कंसोलिडेशन है. 2672 से लेके 2400, ब्रॉडली स्पीकिंग दोस्त ये एक रेंज प्ले है. 2400 से 2700, 300 पॉइंट में रेंज प्ले है 12% का. दैट्स इट. सो नीचे बाय करो, ऊपर में बुक करो, बस चर्न करो. और नेक्स्ट लेग जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है. 2-3 हफ्ते और कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद इसमें मूव आएगी. ठीक है. सो ये है. आज के ज़माने में क्या है ना, लोग ज़्यादा एजुकेटेड अपने आप को समझते हैं, तो लोग इंडियन कल्चर और इंडियन वैल्यूज इथोस को भूल चुके हैं. दे फील एवरीथिंग इज डन ओनली फॉर मनी. सो ठीक है, दैट शोज वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर यू आर हेडिंग टू. रिलायंस, एक बार रिलायंस रिलायंस को दोस्तों ले लेते हैं. रिलायंस पे आज आफ्टरनून में भी शायद मैंने रिलायंस डिस्कस किया था मेंटरशिप के स्टूडेंट के साथ. लेट मी जस्ट ओपन दी चार्ट. रिलायंस में हमने काफी अच्छी एक एनालिसिस की थी, प्योरली ऑन वन टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस विच इज बेस्ड ऑन द कैलेंडर. बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट आया था वैसे रिलायंस पे. ऑल राइट. सो व्हाट आर द चार्ट सेइंग ऑन रिलायंस. कैंडल, मंथली कैंडल की अगर बात करें तो हमने थोड़ी दिन पहले डिस्कस किया था दोस्तों कि मंथली कैंडल बहुत ही बेरिश है. सो सम लिफ्ट विल कम, सम बाउंस विल कम. तो सम बाउंस तो आ चुका है, बट व्हाट इज द स्टोरी नाउ. द स्टोरी इज pretty where is the daily chart. Let me open the daily chart. The story is inside bar एक रिलायंस में हमारा एक व्यू क्रिस्टल क्लियर है काफी दिनों से. एंड द व्यू वाज दैट इफ we are holding this for once, we will go towards the 1520 and 1580 mark, which is this. ठीक है. सो ये एक व्यू हमारा काफी दिनों से, बट इस ये व्यू कभी प्ले नहीं हो रहा था. ओके, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ. सो इसके बाद मैंने यहाँ पे रणनीति चेंज कर दी. मैंने कहा कि अब सपोर्ट से नहीं काम चलेगा, अब रेजिस्टेंस कटे तो बात करेंगे. ठीक है. तो हमने रणनीति चेंज कर दी और हमने क्या कहा, कौन सा लेवल मैंने दिया था, अगर आपको याद है तो थोड़ा लिख के बताइए कि कौन सा लेवल मैंने दिया था, कि व्हाट वाज द न्यू मॉब लेवल ऑन रिलायंस. कौन से लेवल के ऊपर तेजी आएगी. 1442, 1442 के ऊपर तेजी आएगी. और 1442 के ऊपर थोड़ी तेजी आई, ज्यादा नहीं, थोड़ी तेजी आई है. इनसाइड डे. अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि ये अगर गैप अप खुलता है, वो विद द डायरेक्शन ऑफ द गैप आपको एक ट्रेंड डे देगा एंड इट विल कीप शूटिंग टिल 1520 इज नॉट रीच्ड. यानी ये इस तरीके का कैंडल आपको दिखाई देगा. तो जब तक ये गैप के ऊपर है, हम गैप की दिशा में खेलेंगे और ट्रेंड डे डेवलप होगा. सपोज कभी कभार ये भी होता है कि स्टॉक इनसाइड डे इस तरीके से बनाया है और गैप अप होता है ऊपर में, सपोज यहाँ खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है और पूरी तरीके से रिवर्स कर देता है. इसीलिए मैंने कहा है हर बार कि प्लान ए रखो, प्लान बी रखो. जो ये ए प्लस बी दोनों की कॉम्बिनेशन से काम करता है वही ट्रेडर बनता है. ठीक है. बहुत सारे लोग आजकल सोचते हैं कि थोड़े बुक्स पढ़ लेंगे, यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे तो ट्रेडिंग सीख जाएंगे. दोस्तों ऐसा नहीं होता, सालों लगता है सब सीखने में. ओके. इट्स अ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एंड बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड नॉलेज इजीली अवेलेबल है, इसीलिए नॉलेज की इज्जत नहीं है. और इसीलिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत है लोगों के पास, दिमाग कम है. एंड आई एम ट्राइंग टू डू द रिवर्स, कि आप फालतू की इंफॉर्मेशन को निकाल दो, नॉलेज लो. इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता. कमिंग टू दिस स्टॉक, अगेन आई हैव सेड
कि गो विद द डायरेक्शन ऑफ द गैप। अगर ऊपर में खुलता है तो तेजी हम खेलेंगे, जब तक कि गैप के नीचे ना ये आ जाए हम गैप के साथ ही जाएंगे। अपसाइड टारगेट है 1500 1520 का। अगर गैप डाउन करता है तो फिर ये शॉर्ट साइड में हो जाएगा, बट शॉर्टर्स के लिए आप प्लीज बी वेरी केयरफुल। शॉर्टर्स के लिए 1425 का नीचे में टारगेट है, पर थोड़ा सावधानी के साथ ही शॉर्ट करना भाई, बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये अब लेट स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन है। ये स्टॉक को बहुत जल्द से जल्द या तो ये लाइन छूना है या ये लाइन ब्रेक करना है। सो द टाइम इज कमिंग नाउ, ऑलराइट, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। Alright, guys, I think it is almost an hour and we have taken so many stocks. काफी सारी डिस्कशन हमने कर ली है। आई थिंक एक दो स्टॉक में और लूंगा, प्लीज ज्यादा क्वेरी मत बोलिएगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। HDFC लाइफ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, व्हाट्स अप विद HDFC लाइफ। कृष्णा अग्रवाल जी का क्वेरी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स भी अब धीरे धीरे आएंगे। जैसे जैसे किसी का यूट्यूब चैनल थोड़ा पॉपुलर होता है, किसी का थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ जाता है, हेटर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं कमेंट, और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये भी जल्दी आ जाते हैं। तो जो हमारे सपोर्टर हैं, आप सपोर्ट दिखाइए ताकि अच्छा काम चलते रहे, वरना इस दुनिया में पाप का साम्राज्य जो है ये कलयुग में ज़्यादा ही पनप रहा है। ओके, वेरी नाइस, आई लाइक दिस स्टॉक यार, इट्स नाइस। HDFC Life. See why I like this stock. I always admire stocks which gives bouncing bubbles. इसको मैं bouncing bubbles pattern बोलता हूँ. Okay. So I like this type of a stock till they maintain their channel. So this is the channel, and this is a very nice pattern. This type of a pattern. So in this stock, what I would suggest is till 497 is holding up. ब्रॉडली स्पीकिंग 500 से 500 का लेवल, 500 का जो लेवल है, ये जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक वापस से जो है इस तरीके से एक और हाई बनाएगा। यहाँ पे गैप है दोस्तों, एंड इट इज ट्राइंग टू कम नियर द 560 570 मार्क। सो दिस इज द जोन, ठीक है। तो इस तरीके से तो 500 से 570 तक का इसका जोन है, 570 तक ये स्टॉक आना चाहिए, ठीक है। So that will be all on this stock. Now let me very quickly take commodities, because our commodity friends they have to wait for almost an hour. तो फटाफट commodity को एक बार डिस्कस करते हैं। Let us discuss with your crude oil first. So crude oil की चर्चा करेंगे। क्लोजिंग अच्छी है, 2565 की क्लोजिंग है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। फ्राइडे को मैंने आपको शाम के वक्त ही अपडेट कर दिया था, या मे बी शायद 8-9 बजे के आसपास अपडेट कर दिया होगा कि क्रूड ऑयल में भैया कोई पोजीशन बना के मत चलो, चाहे बेरिश भी नहीं बुलिश भी नहीं, बिकॉज आई हैड सेड, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन कि ये जो है क्रूड ऑयल, इट इज रिस्पेक्टिंग माय ट्रेंड लाइन, बट द ड्रॉप्स आर नॉट सस्टेनिंग। तो ऐसे केस में दोस्तों ये हो जाता है कि आपका ये जो पैटर्न है ये बुल फ्लैग पैटर्न भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि स्टॉक यानी ये कमोडिटी है, तो स्टार्टिंग में इसने 2-3 ड्रॉप दिए थे, बेरिशनेस दिए थे, तो जो सेलर्स होते हैं ये दे स्टार्ट टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। सेलर्स को यहाँ पे ट्रैपिंग करता है एंड देन इट मूव्स ऑन द अपसाइड इस तरीके से, ठीक है। तो ये व्यू है कि क्रूड ऑयल अगर यहाँ से बाउंस करना शुरू कर देगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको अगला टारगेट है 2969, which is roughly you can say 3000 mark. All right. Now फ्राइडे को जो गैप डाउन ओपनिंग थी ये रात तक फिल हो गई थी, सो देयर इज नो गैप लेफ्ट। कॉमिक्स पे क्लोजिंग जो है हायर और हायर हुई थी, सो आई बिलीव शायद कल गैप अप ही खुलेगा। ऑलराइट, सो इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग आई बिलीव इट विल, इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग आई बिलीव ये ओपन होगा पिछले हाइस के आसपास, मे बी अराउंड द 2650 लेवल, हो सकता है शायद यहाँ खुले। तो डेफिनेटली अगर ये गैप अप कल खुलता है क्रूड ऑयल तो नो शॉर्ट, मेरी तरफ से कोई शॉर्ट नहीं है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। मैं शाम को एक बार चेक करूंगा, अगर वो गैप अप के बाद फॉलो थ्रू सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है तो ही मैं शॉर्ट की कोशिश करूंगा। फिलहाल क्रूड ऑयल पे यही व्यू है कि इससे बाहर रहिए, कल की ओपनिंग और कल के मूवमेंट के बाद हम इसमें डिसाइड करेंगे। और रीजन मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये 3000 या तो जाने वाला है या फिर ये 2000 आने वाला है, एंड राइट नाउ इट इज एग्जैक्टली एट द मिडल। तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में
चढ़ जाएंगे इस ट्रेड में, वेरी वेरी सिंपल. सो इट इज क्रिएटिंग अ ट्रैप. लेट अस सी वेदर इट इज bear trap or whether it is bull trap. We will come to know very soon. गोल्ड सिल्वर के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे, स्पेशली एमसीएक्स वाले को देख लेते हैं 46,654 को. सो गोल्ड में क्या हुआ है, लेट अस सी द डेली चार्ट और थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं कि गोल्ड में हमने क्या डिस्कस किया था. थोड़े दिन पहले हमने गोल्ड में बेरिशनेस की डिस्कशन की थी जब ये लगभग 47,000 के लेवल पे था, और इस पे हमने डिस्कस किया कि क्यों गोल्ड अगर यहाँ से गिरना शुरू करता है तो एक ही टारगेट है नीचे, वो है 45,800. यानी लगभग एक 1200-1300 पॉइंट का इजी ड्रॉप था गोल्ड में. ये होता है एंड देन गोल्ड स्टार्ट्स टू राइज creating a nice hammer, but I had said this hammer is a trap और इसमें कुछ खास फॉलो थ्रू नहीं होगा. एक लेवल दिया था 46,850 या 46,800 का. थर्सडे के दिन अगेन ये बहुत अच्छा एक ड्रॉप देता है. इंट्राडे 500-600 पॉइंट की अच्छी एक मूव आई थी एंड लुकिंग एट दिस कैंडल फ्राइडे वापस से तेजी में ऊपर चला गया. सो अब क्या सिनेरियो है, अब सिनेरियो ये है कि इसका मॉब लेवल यानी जो हमारी गोल्ड है एमसीएक्स की करंट कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 5 जून की एक्सपायरी है, इसका दोस्तों यही मॉब लेवल है. यानी ये लगभग आई थिंक दिस लेवल विल कम एट 47,000, इट इज अप्रोक्सीमेटली से 47,100, 47,100 के आसपास का ये लेवल है. तो ये फिलहाल थोड़ा अपसाइड जा सकता है. ओके, थोड़ा अपसाइड जा सकता है. अगर हम ऐसे भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन तो नहीं मैं कहूंगा, बट मान लो ठीक है शॉर्ट टर्म लोकल ट्रेंड लाइन है, लोकलाइज ट्रेंड लाइन इस तरीके से कि कोशिश कर रहा है चैनल दिखाने की, कोशिश तो कर रहा है कि चैनल दिखाने की, बट फॉरगेट अबाउट दैट फ्लैग पैटर्न, जस्ट फोकस ऑन द चैनलाइज पार्ट. तो अगर ये चैनल ब्रेक करके यहाँ पे जाता है 47,000 पे और बॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है ना, तब इसमें मैं अच्छा शॉर्ट करूंगा. तो एक तो ये ट्रेड प्लान है कि लेट इट ब्रेक, जाने देते हैं 47,000 तक, वहां देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सप्लाई कितनी तगड़ी है. हॉरिजॉन्टल सप्लाई अगर तगड़ी है तो फिर शॉर्ट करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं छोड़ देंगे. क्योंकि ये फ्लैग अगर जेन्युइन अपना अगर दिखाना शुरू कर दिया तो दोस्त ये ऐसे शेप लेगा 1 2 ABC लाइक दिस, ABC लाइक दिस, टारगेट ये हो जाएगा. सो इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज बी वेरी केयरफुल. ठीक है, सो 47,000 पे देखते हैं, कल की ओपनिंग देखते हैं, आफ्टरनून सेशन में देखेंगे, और कल जब मैं आफ्टरनून में लाइव आऊंगा उस समय एक बार देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है. ओवरऑल आई बिलीव 47,000 से लेके एक कंजर्वेटिव रेंज अगर मैं रखूं तो आपका 46,000, ये 1,000 पॉइंट में ही ये चॉप 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 करेगा एंड फेलियर जिस भी दिशा में करे फिर ट्रेड आ जाएगा. तो कल सुबह एक बार इसको देखते हैं. सिल्वर एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सिल्वर ऑन योर एमसीएक्स ही मैं ले लेता हूँ बिकॉज दैट विल मेक मोर सेंस. 50,118 का लेवल है सिल्वर पे. नाउ दिस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द डेली चार्ट. इट इज क्रॉसिंग सम वेरी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस, बट सिल्वर की दोस्तों एक निशानी ये है ना कि सिल्वर ऊपर के लेवल पे जब चढ़ जाता है तो इसमें बाई साइड खेलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है. जो लोग सिल्वर 10-15 साल से ट्रेड किए हैं आप समझ सकते हैं कि सिल्वर अगर ऊपर में अगर आप फंस गए तो फिर जान ले लेगा सिल्वर. राइट नाउ लेट मी क्विकली टेक दी डेली चार्ट. सी डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस आता है इस तरीके से यहाँ पे, which is approximately this 50,000 50,500 टाइप ऑफ लेवल. दैट्स इट. एक रीटेस्ट पेंडिंग है इस कैंडल का, इस कैंडल की रीटेस्ट नहीं हुई है. अगर मैं एग्जैक्ट लेवल निकालूं तो ये भी लगभग 51,000 तक आती है. रीटेस्ट क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए इस कैंडल के बाद अगला कैंडल ब्लैक था, यानी एक डिक्लाइन, शार्प डिक्लाइन, बट कोई राइट हैंड साइड में कैंडल इसको रीटेस्ट नहीं किया. इसको हम कहते हैं नेकेड लेवल, नेकेड लेवल. तो मार्केट धीरे धीरे करते हुए सारे नेकेड लेवल्स को रोटेट करते करते मार्केट टेस्टेड लेवल बना देता है. नाउ ऑल दिस इज कमिंग नियर this zone. So for silver, please be cautious on the long side. You are approaching a major resistance zone. 50,500 से 51,000. This is a major supply zone. Please be very careful. Okay. Trading level अगर इसमें देना हो तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि 49,300 का इसमें एक सपोर्ट है. I think that is the last support for bulls. So 49,300 का लेवल को ध्यान में हम रखेंगे और अपसाइड में 50,500
से लेके 51,000, ये जो 500 पॉइंट का जोन है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लमेटिक जोन फॉर सिल्वर। सो प्लीज बी केयरफुल एंड बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लफड़ा हो सकता है। अगर थोड़ा भी अपसाइड में इशू आया तो सिल्वर गिर जाएगा एंड देन यू विल बी ट्रैप। सो प्लीज बी केयरफुल। सौदा नहीं मिले चलेगा, बट ऊपर में ट्रैप मत होना, ठीक है। सो अगेन कल देखते हैं कहाँ खुलता है, कैसा है। अगर कुछ इंट्राडे अच्छा सेटअप मिला तो इंट्राडे भी एक ट्रेड ले लेंगे सिल्वर में। एंड रिसेंट जो ब्रेकआउट है अच्छा है, ब्रेकआउट तो अच्छा ही है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज जब कोई चीज बहुत ज्यादा चढ़ जाती है तो जितने लेट स्टेज के ब्रेकआउट होते हैं वो थोड़े खतरनाक हो जाते हैं, दे आर क्वाइट रिस्की इन नेचर। सो दैट्स ऑल आई वुड से। रेस्ट आई थिंक वी हैव डन, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल, बाकी कुछ नेचुरल गैस वगैरह डिस्कस करके मतलब नहीं। नेचुरल गैस को गैप अप ओपनिंग होगा एंड वंस अगेन एमसीएक्स पे आपको दोस्तों 155 का एक पेंडिंग टारगेट है एंड वंस अगेन इट विल गो। आई थिंक कल फिर से शायद ये गैप अप खुलेगा एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एंड यही चीज होगा। सो लेट अस सी, कल देखते हैं। एंड कल आफ्टरनून में हम लाइव वापस आएंगे अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक कल हम आएंगे लगभग 1 बजे के आसपास, तो मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा लिंक। सो आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइएगा, उस समय एमसीएक्स और करेंसीज दोनों हम लेंगे और स्टॉक मार्केट को भी एक बार डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों दैट विल बी ऑल। वीडियो बहुत लंबा हो गया एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल दोज गाइस हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग। 5 more days are left. We are conducting it on the next weekend, June 6th and 7th. Feel free to WhatsApp, but please जो सीरियस है वही आइए। टाइम पास लोग प्लीज, कोई मतलब नहीं है, अपना भी आप समय खराब करेंगे, हमारा भी। सो सीरियस गाइस हु वांट टू लर्न मार्केट्स, ट्रेडिंग, एवरीथिंग, आप आ जाइए, जुड़िए, रजिस्टर हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए एंड हैव फन। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। कल मिलते हैं बाजार में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी।